हाउ डेयर यू, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना इस वीडियो को देखो. Not fair. Hi guys, welcome back to my channel and yet another episode of Nick Reads. In today's video, I'm going all the way from South Delhi to Patel Nagar to explore some amazing food options. Do you know what I'm gonna try? I'm gonna try some ghee roast, chicken keema, biryani. Oh my god, सुनते ही मुंह में पानी आ रहा है मेरे. I can't wait. Come with me to taste test. So finally I have reached Zed Corner and this place sells only 3 items guys. It's keema chicken, keema mutton and amazing biryani that they call pulao. I can't wait to taste. Come with me. Alright, so finally I'm in Zed Corner and I've ordered myself a plate of chicken biryani, a plate of chicken curry that's served with keema gravy. Unfortunately, the mutton that's high in demand is sold out. Next time I'm gonna come a little bit early. But yeah, they serve unlimited number of rotis with the chicken curry and the price for both of them are 300 rupees. And the best part is everything that you see here is made with प्योर देसी घी. असली इसका स्वाद इसके ग्रेवी में है. दैट दे चार्ज 80 रुपीज़ एक्स्ट्रा. इफ आपको अगर एक्स्ट्रा ग्रेवी लेनी है दैट दे चार्ज 80 रुपीज़ एक्स्ट्रा, बट इट्स टोटली वर्थ इट बिकॉज इसकी ग्रेवी इतनी अमेजिंग है. लेट मी जस्ट सैंपल इट. This chicken is melt in the mouth. Its gravy is just wow. I'm sorry, I guess I said 80, but the asli price of this gravy is 180 rupees. Amazing guys. You have to come here and try it for sure. Let me try the biryani as well. I guess I'm slipping into a coma, a food coma. They've used around more than 22 spices in this preparation and it's amazing. Indian spices का जवाब नहीं. This is so flavorful. मुझे ऐसा लग रहा है flavors are playing holy inside my mouth. Amazing. Alright guys, so I have Neeraj Bhaiya with me who has been running this shop since 17 years and he expects people every day. He's like, whenever I call him, he's like, madam आज तो लोग हैं. So let's ask Bhaiya, how did you come up with this recipe? हमारी एक ना शॉप है मेन सदर बाज़ार में. मेरे मामा वो चलाया करते थे तो उनको देख इंस्पायर हुआ कि वो खुद बनाते थे तो मुझे था भी मैं भी ये काम करना चाहता हूँ. तो मैंने इसको बनाया 12 बार 15 बार 20 बार. जब मुझे लगा भी ये टेस्ट कस्टमर जो खाएगा वो याद करेगा कोई चीज़ खाएगी, तब इसको मैंने एज ए बिज़नेस शुरू किया. लगभग मुझे 17 साल हो गए काम करते हुए और दैट्स इट. आप सिर्फ 3 आइटम्स बेचते हो और तीनों की कॉस्ट है 300 रुपीज़ एंड रोटियां अनलिमिटेड. आप बताएंगे कुछ उसके बारे में? नहीं, को अलग से कुछ हटके करना था कि भाई कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए भी लोग नजर. हाँ भाई चपाती आप जितनी मर्जी खाइए, हमारा लड़का सर्व करता रहेगा. आप मना करेंगे कि बस, वो मना नहीं करेगा, वो आपको रोटी दे जाएगा. आप रोटी ऐसे चपाती एक अलग हटके थोड़ा करना था इस वजह से. What is the highest record of someone eating maximum number of chapatis? 12 रोटी किसी ने खाई. Guys, 12 रोटियां. If you really want to have a competition with your friends, this is the right spot. आइए और competition लगाया है कौन कितनी रोटी खा सकता है.